So hello everyone and welcome to Career Launcher. So I hope you all are aware that every Sunday at 8 p.m. We come up with this session where I discuss static GK. I give you questions and you have to answer it in the live chat, the static GK questions, which is in recent days, what we are doing is we are actually bringing questions. I'm bringing questions from the NCRT book, history book, class 12. I find it important because maybe some of you might be attempting 12th board exam or CUET or any other exam from where actually NCRT book, the questions are asked from NCRT book. So I find it important. And that is why I have decided to give questions from here. So let's begin again. If you have not watched the previous parts, go and watch it. We have a separate playlist for it. So आप playlist के section में जाना and you can watch the previous parts. So let's begin with the first question of the day. So these are the questions which are from the NCRT book, and they were perhaps being asked in different board exam or let's say in any other prominent exams. ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये सब क्वेश्चन लाया ताकि ये बोर्ड के एग्जाम्स में या और भी डिफरेंट प्रोमिनेंट एग्जाम्स में एनसीईआरटी बुक से ही पूछा गया है. ठीक है, so that is why I'm giving you these questions. Read the question carefully and then answer me. ठीक है, there is no need to be in a hurry, but yes, आप सोच के आराम से आंसर कर सकते हो. And I'm waiting for the response for everyone. Yes, Veer Sharma has said option A. What about others? बाकी लोग की क्या राय? Drija is also saying A. So the question is, assertion says Lahore session of Indian National Congress in 1929 was significant. Okay, yes, fine. Now please tell me, Lahore is who was the president of the Indian National Congress in the Lahore session, and Lahore is on the bank of which river? So Lahore session Indian National Congress का December 1929 में हुआ था. It's significant है because they decided to have a Purna Swaraj resolution to be celebrated on which day? Or complete independence? Yes, V. Sharma has written 26 January 1930. So they decided in the next month on 26 January 1930 because they were doing, they are having the Lahore session in December 1929. So they decided that the next month, 26 January 1930, they would be celebrating Purna Swaraj Divas or Complete Independence Day. So the right answer actually is both A and B. देखो A और B option are both close to each other. So be careful. It is asking R is correct and R is the correct explanation. तो पूछ रहा है कि significant था, तो क्यों significant था? Why it was significant? Is the answer there in R? Reason उसका आंसर है. कभी कभी क्या होता है कि दोनों सही होता है लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता है. ठीक है, सो बी केयरफुल. ए एंड बी आर वेरी डेंजरस. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी बोर्ड्स एग्जाम में आई हैव सीन एंड समटाइम्स आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो बी केयरफुल. द प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड. इज इट द रीजन? क्या इस कारण से लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सिग्निफिकेंट है? यस. सो द राइट आंसर इज ए. बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. बोथ ए and R assertion and reasoning is correct, and reasoning is the correct explanation of A. ठीक है, so A is the right answer. Panish is saying, sir, I'm scoring around 60. Yes, you can still try. ठीक है, हार नहीं मानना है. So still you have ample amount of time. So in fact, from tomorrow onwards, Monday 6 p.m. से Monday to Thursday we'll be having revision series at 6 p.m. So from tomorrow onwards on the same YouTube channel we are starting revision series. तो उसको आप join करना, watch the live sessions, learn more, and over the period of time you will keep on learning. ठीक है, okay, ठीक है. So yes, कहाँ पे Lahore session? No one said Lahore is actually on the bank of which river? यहाँ पर here you will find Lahore on the bank of Ravi river. And no one answered me that who was the president of Lahore session. नहीं, करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा वीर शर्मा. From tomorrow onwards at 6 p.m. we'll be having a revision of current affairs, which will be important for the upcoming CLAT AILET exam. Ravi River Seam for Harappa. Very good, Veer Sharma. Please tell me who was the president of Lahore session of Indian National Congress. किसी ने आंसर नहीं किया अभी तक. President of Lahore session of Indian National Congress.
Yes, Preetham, very good. Jawaharlal Nehru was the, at that time he was quite young and he was the president of Indian National Congress. Okay. Yes, V. Sharma, you are also right. JL Nehru, देखिए, because Motilal Nehru was his father, he was also a prominent at that time. तो ये आपको पता होना चाहिए. Okay, now here's a question. This was also asked in the board's exam, so that's why I'm asking it. Now you can see in the map A and B, and both are related with Indian national movement or the history of the Indian national movement. So can you please tell me what is A and what is B? Yes, good evening, Dharini. Welcome to the class. A क्या चीज है और B क्या है? And these two are famous for some prominent event. A is Amritsar, Lucknow. B is B is Guwahati, not Guwahati. A is Amritsar. A is Amritsar. Fine, I agreed. देखो, this is the state of Punjab. ठीक है, तो ये सब बोर्ड्स एग्जाम में आया हुआ भी है. ठीक है, सो चौरी चौरा गोरखपुर. यस, वीर शर्मा, वेरी गुड, यू आर वेरी राइट. हाँ, राखीगढ़ी हरियाणा में, नॉट राखीगढ़ी. ठीक है, सो दिस इज पंजाब. पंजाब में जो ये वाला रीजन है, द बॉर्डर पे, दिस इज अमृतसर. एंड व्हाई इज अमृतसर इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? व्हाट हैपेंड देयर? ओ, लाइन के एंड वाला आप समझ रहे थे. ओके, सो दैट इज व्हाई यू थॉट. नहीं, जो जहां पे डॉट दिया ये पूछा जा रहा है, दिस इज ए, इस पर लिखना है, इस लाइन पर. सो द आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, अमृतसर. व्हाट हैपेंड इन अमृतसर? व्हाट इज सो स्पेशल? कोई एक हिस्टोरिकल, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट हैपेंड. यस, जलियांवाला बाग मैसेकर, इसीलिए वो लिखे 13 अप्रैल 1919. जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड. बाग मैसेकर. ओके, इसी से आप लोग सीख लोगे भी, है ना. ठीक है, वेरी गुड. दूसरा बी मैं पूछा था, किसी ने लखनऊ बोला था. देखो, लखनऊ बीच में कहीं पे यहाँ पे पड़ता है, मतलब समवेयर हियर यू विल फाइंड लखनऊ. सो लखनऊ कैन नॉट बी द आंसर. ये जो बी है, ये चाहे तो बनारस अगर बनो, वाराणसी समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं पे, या दिस इज एक्चुअली चौरी चौरा इन गोरखपुर. गोरखपुर. व्हाई इट इज फेमस चौरी चौरा? व्हाट हैपेंड देयर? यस, 1922. यस, वीर शर्मा, यू आर राइट. और इसी के जस्ट नीचे बनारस है. तो अगर आप बनारस भी आंसर करते तो ठीक होता, बट इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन की क्या क्वेश्चन में. कहीं कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कि बी इज द प्लेस वेयर दिस हैपेंड, तब आपको हाँ यस, चौरी चौरा इज द प्लेस एक्चुअली वेयर गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया था, बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज 22 पुलिसमैन गॉट बर्न्ड इन अ वायलेंस एंड ऑल. And that is why police station burning. Yes, Aditya Das, you are right. Veer Sharma, Dharini, you are right. ठीक है, तो अगर ये लिखा हुआ ऑप्शन में कि B is the option where actually the place where non-cooperation movement happened or something like that, और अगर ये लिखा हुआ इसकी जगह पर कि B में लिखा है कि this is the place where a university was established and Gandhi ji came and gave the speech, तब आप क्या बोलोगे? If the option B, then you should be answering Banaras because we are having Banaras Hindu University there. ठीक है, तब आप बनारस आंसर करोगे, बिकॉज ये भी यहीं पे रफली थोड़ा सा नीचे होगा, बट ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन नॉट. यस, प्रयागराज वहां पे नहीं है. नहीं, प्रयागराज इज समवेयर हियर. इट कैन नॉट बी द आंसर. प्रयागराज यहाँ पे कहीं पे होगा, इलाहाबाद और प्रयागराज. ठीक है, ईस्ट यूपी है ना. बी इज शोइंग इज बी, ईस्ट यूपी. हाँ, तो बनारस आप बोल सकते हो. कुशीनगर भी यहीं पे कहीं पे, विच इज नियर गोरखपुर. दिस इज द प्लेस वेयर, कुशीनगर भी यहीं पे कहीं पे मिलेगा, वेयर एक्चुअली द प्लेस वेयर गौतम बुद्धा डाइड. तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है द प्लेस वेयर गौतम बुद्धा डाइड, देन यू हैव टू राइट कुशीनगर हियर. ठीक है, हाँ. Okay, let's move on to the next question. The question number 3, which is in front of you. Read it carefully and then answer me. These are the questions asked in the exams, whether in board or in prominent exams. तो इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ. और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं. असर्शन, रीजन, बस ये देखना है ए और बी में ख्याल रखना है कि आर अगर कई बार क्या होता है दोनों सही भी होता है तो रीजन कई बार नहीं एक्सप्लेन कर रहा होता है क्वेश्चन को, है ना. सो रीड द क्वेश्चन एंड आंसर. जलियांवाला बाग मैसेकर मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. यस, एक टर्निंग पॉइंट था. The massacre spoiled the relationship between British and the Gandhiji, of course, because Indians became very unhappy with the British that you have killed so many people and all. तो reasonable है. तो ये इस रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है. यस, एक्सप्लेन कर रहा है. द राइट आंसर इज ए.
Yes, Dharini, Preetam, Veer Sharma, Aditi, Adrija, you are right. A is the right answer to this question. ठीक है. So मतलब कि ये पूछ रहे हैं कि टर्निंग पॉइंट क्यों, टर्निंग पॉइंट तो एक्सप्लेन कर पा रहे. यस, इसलिए टर्निंग पॉइंट था, इसलिए कि गांधी जी और इंडियंस जो है ब्रिटिश से नाराज हो गए. तो ये सही बात है. हाँ, सो इज द राइट आंसर, यू कैन से, है ना. Yes, Nisha, Adija, Aditi, you all right. Now the next is in the dash, the executives were made entirely responsible to the provincial legislature. प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव नहीं, स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसको कहते हैं. ठीक है, जैसे आज कह सकते हैं एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, द मेंबर्स आर कॉल्ड एज एमएलएस. ठीक है. डैश द एग्जीक्यूटिव्स वेर मेड एंटायरली रिस्पांसिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. व्हाट इज द राइट आंसर? यस, वीर शर्मा, यू राइट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद. ठीक है. एक तरह की, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस दैट 1935 के बाद प्रॉमिस किया था कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो बजाब्ता. यस, वीर शर्मा एंड निशा, यू बोथ वे राइट. And the elections happened in the 11 provinces 2 years later in 1937, है ना, under government of India Act 1935. ठीक है. So the right answer is C is the right answer. ठीक है. So government of India Act 1935. आपको पता है majority of the things, or like most of the things in Indian Constitution has been taken from here. Although we have borrowed from different places, French से, France, Germany, Italy, बहुत जगह से borrow किया है. बट अगर ये पूछा जाए मैक्सिमम वी हैव बोरोड फ्रॉम वेयर, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है. सो यस, तो बहुत सारी चीजें बनी थी, जैसे फॉर एग्जांपल बर्मा और ब्रिटिश इंडिया को सेपरेट किया गया. आपको पता होगा ना, दिस वाज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन. तो पहले पूरा, तो ब्रिटिश यूज्ड टू कंट्रोल वन लाइक दिस, पूरे को कंट्रोल करते थे. बट बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद अलग अलग कंट्रोल करने लगे. सो दे स्टार्टेड separately controlling it. Even RBI, which was formed as a result of RBI Act 1934, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर परव्यू ही में माना आता है. ठीक है. देन फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश हुआ, सॉर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट समझ लो, स्टैब्लिश हुआ 1937 में. देन इलेक्शंस हैपेंड, बाइकैमरलिज्म इलेक्शन, बहुत कुछ हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में. सो एक और चीज, जैसे 3 लिस्ट हम लोग बोलते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, 3 लिस्ट आपने सुना होगा. इवन टुडे वी आर हैविंग दिस कॉन्सेप्ट. अच्छा, ये कहाँ मेंशन है आज? Where do you find these 3 lists today? These list बताइए. So like federal list, अब इसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट कहते हैं. So this concept we have taken it from Government of India Act, है ना, and this is mentioned in 7th schedule. Very good. So 7th schedule of the Indian Constitution. Very good, Dharini, है ना. आज जो ये 7th schedule में mentioned है. Yes, Veer Sharma, you are also right. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स मेंशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो ये सब पता होना चाहिए, जस्ट हैव एन आइडिया, गो थ्रू इट. मैंने अटैच कर दिया है. सो आफ्टर द क्लास इज ओवर यू कैन रीड अबाउट इट इन डिटेल. ठीक है. फेडरल कोर्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट टाइप की थिंग. सो समथिंग सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पे बनाया गया था. नाउ इट वाज, जब आजादी के बाद, नाउ इट वाज रिप्लेस्ड विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. Okay, so these are the things. Now let's move on to the next question. इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना बस, I don't think इतना डिटेल जानना होगा. Let's move on to the next question. Who among the following was the president of Constituent Assembly? ये भी boards में, boards and different important competitive exams में they have asked it. कौन थे president? Yes. Everyone should be answering it because I'm expecting everyone to answer. Yes, Dharini and V. Sharma both are right. Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly. ठीक है, ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. And later on, when the Constituent Assembly was abolished, he became the President of India. कहीं कहीं पे प्रेसिडेंट की जगह चेयरमैन वर्ड लिखा रहता है, तो भी वही होगा आंसर. ठीक है. Yes, Adrija, Nisha, you all were right. Now let's move on to the next question. हाँ, Senior was the temporary chairman. Yes, yes, Veer Sharma, you're right. हाँ, good. Who among the following served as the chairman of drafting committee of the Indian Constitution? This is the easiest question, so I'm expecting everyone to please answer. Yes. And if I'm asking who was actually the constitutional advisor of Constituent Assembly, then what should be the answer? B is the right answer. Yes. नहीं, इसका आंसर, सॉरी, इसका आंसर तो सी है.
But constitutional advisor का आंसर बताना. Yes, C is the right answer. Yes, B.N. Rao was the constitutional advisor. Yes, V. Sharma, you're right. So V. Sharma, Dharani, Panishar, Adrija, Nisha, Aditi, you all the right. So here जो मतलब इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो C है, बट इस क्वेश्चन का जो मैं पूछ रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका आंसर B.N. राव होगा. ठीक है, सो यू शुड नो इट. दिस इट शुड बी क्लियर, है ना. तो जो टेम्परेरी चेयरमैन थे वो सचिदानंद सिन्हा थे, जैसा कि वी शर्मा हैड रिटन इन द कमेंट आल्सो. देन द परमानेंट चेयरमैन और परमानेंट प्रेसिडेंट जो भी कह लो वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Then we have chairman of drafting committee, Dr. Bhimrao Ambedkar from SCF, Scheduled Caste Federation. ठीक है. Then we have constitutional advisor B.N. Rao. सब पता होना चाहिए. These are the famous personalities. और ये लोगो अगर आप गौर से देखोगे, there's an undivided India and the front face of elephant. That was the logo of Constituent Assembly. Which one of the following languages was emphasized by Gandhiji for the status of national language? "75 years of constitution." अच्छा ठीक है, I will write your suggestion, और अगर हमको मौका मिलेगा सो आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट योर सजेशन. ठीक है, मैं देखता हूँ. इफ आई गेट अ चांस आई विल. ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर हियर? गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल लैंग्वेज डिबेट बहुत हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में. तो गांधी जी की क्या राय थी कि क्या नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए? V. Sharma and Nisha said B. What about others? Yes, Adrita and Gaming is saying A. Adija Das is saying B. हाँ, actually गांधी जी wanted हिंदुस्तानी. तो ये हिंदुस्तानी कौन सी लैंग्वेज है? The right answer is B. Actually, this was asked in the board exams many times. ठीक है, बोर्ड में पूछा गया. And it isn't a language. Urdu and Hindi mixture, right? So he actually said that it should be Hindustani language, which should be a mixture of Hindi plus Urdu. फिर उन्होंने ये कहा था कि it should neither be Persianized Urdu, यानी पर्शियनाइज्ड उर्दू नहीं होनी चाहिए, और संस्कृताइज्ड हिंदी नहीं होना चाहिए. मतलब एकदम एकदम ठेठ हिंदी भी नहीं होना चाहिए और एकदम ठेठ गाढ़ी उर्दू भी नहीं होना चाहिए. मतलब जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है, which is actually which we speak in the North India. So we do not know whether we are speaking a Hindi language or an Urdu language when you speak in Northern India today. You do not know it. Even if you are speaking Hindi, there are some Urdu words maybe, or if you are speaking Urdu, there are Hindi words. तो उसी तरह की भाषा कहने का मतलब है कि it should be a mixture of Hindi and Urdu, neither Persianized Urdu nor Sanskritized Hindi, but a local type language and all. ठीक है, बोली भाषा जैसे. हाँ, yes, you can say. So that is what you should be knowing it. Technically हिंदुस्तानी कोई लैंग्वेज होती नहीं है, बट गांधी जी ने यही टर्म यूज किया था, तो इसीलिए you should be knowing. B is the right answer. Who among the following was considered as a political mentor by गांधी जी? मेंटोर मतलब क्या होता है? एक तरह का पॉलिटिकल गुरु कह सकते हो. दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक. व्हाट इज द राइट आंसर? यस, वीर शर्मा, प्रीतम, निशा, अदीजा, पनिशर, यू ऑल राइट. गोपाल कृष्ण गोखले को कहते थे. इट वाज कंसिडर्ड एज, गांधी जी यूज्ड टू कंसिडर हिम एज हिज पॉलिटिकल गुरु. ये पता होना चाहिए, इट्स क्वाइट फेमस, सो यू शुड नो. अच्छा, एक चीज और बताना. इन चारों में से हु वाज एक्चुअली कॉल्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? इन चारों में से किनको कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? हाँ, दादा भाई नौरोजी कहते थे. गुड. हाँ, दादा भाई नौरोजी. यस, प्रीतम, अद्रिजा, गुड, वेरी गुड. Now let's move on to the next question. Who among the following demanded justice for women, not reserved seats or separate electorate in Constituent Assembly?
थोड़ा सा आई नो दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट बट आई हैव टेकन इट फ्रॉम दोस एनसीईआरटी बुक्स. कई बार मैंने देखा है बहुत सारे एग्जाम्स में दे डायरेक्टली कॉपी फ्रॉम एनसीईआरटी, whether it's a UPSC exam or a COET exam or any other exam, they directly copy. कई बार होता है कि एनसीईआरटी में लिखा स्टेटमेंट वहां से उठा लेते हैं. So that is why I have decided to have these questions also. थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट लेट मी सी. Justice for women, not reserved seats or separate electorates. So the right answer is yes, Dharini, you are right. B is the right answer. Hansa Mehta. ठीक है. So Hansa Mehta demanded justice for women, not reserved seats or separate electorates. Okay. बेगम एजाज रसूल ने कहा था कि मुस्लिम should not be given separate electorates. ये कहा था. That is what he said. That she belonged to the same community, but she said that yes, if after independence, if they are given separate electorates, it will be harmful. The minorities will get isolated and all. ठीक है. तो स्पेसिफिकली ये वर्ड की जस्टिस मिलना चाहिए वोमेन को and not reserved seats or separate electorate was used by Hansa Mehta. Okay, the next question is again we are talking about national languages and all. So please read it carefully and then answer me. Okay, regarding the Gandhi ji's opinion about national language. So this is the question. Please read it and answer me. Yes, Gopesh, Arts, you are right. We have taken actually from the CBSE board exams. Many of their questions are actually from there. Yes. मैं इसलिए दे रहा हूं because these all are actually from NCERT book only, and these are board exams question which can be easily repeated in COET or any other exam, CLAT, SLAT, AILET, कहीं भी जहां पे भी static questions पूछते हैं. कुछ लोग A बता रहे हैं, कुछ लोग D बता रहे हैं, कुछ लोग C बता रहे हैं. Yes, वीर शर्मा and gaming सिंह C. देखो मैं बताता हूँ. First is it should be Hindustani language, which should be neither Sanskritized Urdu, Hindi, or nor Persianized Urdu, but a blend. Blend means mixture of both. ये तो मैंने अभी ही बताया कि गांधी जी believe that there should be a national language called as Hindustani, which should be a mixture of Hindi and Urdu, normal speaking. Option 1 कहां पर है? ये वाला है. अब पूछ क्या रहा? करेक्ट पूछ रहा. Find out which of these ideas were advocated, supported by गांधी जी. तो 1 कहां पर नहीं है? So B में नहीं है तो इसको काट दो. ठीक है. It should not admit words from other different religion. अभी हमको मान ले नहीं पता आपको एग्जाम में. ठीक है. The national languages must develop into a rich, powerful instrument capable of expressing the thoughts and feeling of the people. ये कॉमन टाइप, इसको गलत कहना बहुत मुश्किल है. ये तो सही है स्टेटमेंट. Just think in the examination, you are sitting in the exam and cutting this is not because ये जनरलाइज स्टेटमेंट है. आप सोचो ना, इसको गलत कैसे कहोगे? तो 3 भी सही होगा. अब देखो, इट कुड यूनिफाई हिंदूज एंड मुस्लिम्स. तो गांधी जी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इट, यूनिटी एंड ऑल. तो ये भी सही होगा. ठीक है. तो 1, 3 एंड 4. दूसरी बात आप सोचो कि ये कह रहे हैं कि किसी और लैंग्वेज से कोई वर्ड एडमिट नहीं करे. पहली बात तो इस ऑलरेडी 2 लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, हिंदी और उर्दू. और उर्दू की बहुत सारे लैंग्वेज कई जगह से लिए हुए है ना. तो ये कहना कि एक भी वर्ड बाहर से नहीं लिया जाए, दिस इज डिफिकल्ट. तो दिस इज रॉन्ग है ना. सो 1, 3 एंड 4 वुड बी द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. Because Hindustani language himself, Gandhi ji is saying that Hindi and Urdu से लिया हुआ. और उर्दू की तो आपको पता होगा ना कि उर्दू की ओरिजिनल कोई वर्ड. अच्छा, do you know this? देखो मैं बताता हूँ. उर्दू का ना, उर्दू is a language which was developed in India and it do not have any own word. Actually, उर्दू का अपना कोई भी वर्ड नहीं होता है. It is a language which is a mixture of all the languages. वो सारे वर्ड्स कहीं और से, अरबिक, पर्शियन, हिंदी, संस्कृत, टर्किक, कहीं और से लिया हुआ, उसको मिक्स करके एक नया लैंग्वेज बनाया गया. सो उर्दू इटसेल्फ मींस दैट इट इज अ मोजाइक ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो दूसरे वर्ड कैसे नहीं लिया जाएगा ना. इवन हिंदी में अगर आप देखोगे संस्कृत से बहुत सारे वर्ड लिए होते हैं, है ना. सो कोई भी लैंग्वेज है ना, एकदम ऐसा नहीं होता प्योर होता है कि इससे बाहर से कुछ नहीं आया. कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस होता ही है, लाइक दैट, है ना. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. ठीक है. सी इज द राइट आंसर. अच्छा, Urdu is a mixture of Arabic, Persian, Hindi, Sanskrit, Turkish and many other language. और भी बहुत सारी लैंग्वेज है. Perhaps even South Indian की कुछ languages का भी influence है. ठीक है. I am not also, हाँ. Script is Arabic. Yes, the script is Arabic, but the words have been taken from different places. ठीक है.
ठीक है, जैसे बहुत सारी लैंग्वेज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे वी यूज द वर्ड ब्रदर, हिंदी में भी लिखते हैं, उर्दू में भी ब्रदर लिखते हैं, ठीक है। पीटर, पीटर इज नथिंग बट फादर, इन उर्दू वी कॉल इट एज पिदर, इसको उर्दू में ऐसे लिखते हैं पिदर, ठीक है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट दैट यस we actually take languages, there is no there is sharing of words from one language to other and all, ठीक है। और उर्दू तो खैर इसी के लिए फेमस है, ठीक है। सो यू शुड नो दीज थिंग्स, इज द राइट आंसर। ओके, तो ये दिस आई हैव टेकन इट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। और गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज वुड हेल्प अस यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है ना। हिंदुस्तानी लैंग्वेज होना चाहिए, वी शुड नाइदर बी संस्कृतराइज्ड हिंदी नॉर पर्शियनाइज्ड उर्दू, ठीक है। तो ये सब गांधी जी ने वर्ड कहा था, and that is why I've taken it from there. Now let's move on to the next question. Please read it and then answer me. This is directly from the NCERT book, and this statement is given by which personality? I believe separate electorates will be suicidal. So basically this is talking about constituent assembly debates. Constituent assembly में लोग बैठे हुए डिबेट हो रहा है, and people are giving opinions, the members, ठीक है। You are saying it's said in opposition to communal law 1930. यस वीर शर्मा, अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हो तो ठीक है, मे बी यस, बिकॉज ही क्रिटिसाइज्ड द कम्युनल अवार्ड 1932 में। बट हियर जो है ना, सिंस आई हैव गिवन अ हिंट, इट इज अबाउट कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स मींस 1946 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, है ना, 1946 से 50, सो जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस और अराउंड द इंडिपेंडेंस देयर इज अ डिबेट हैपनिंग। सो सब लोग खड़े उड़े के बोलते हैं ना, सो पीपल आर गिविंग देयर ओपिनियन, वन मेंबर स्टैंड एंड स्पीक्स एंड ऑल, कि क्या आजादी के बाद हम लोग को ये कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। दिस इज व्हाट द सिनेरियो इज, ठीक है। सो बेसिकली द राइट आंसर इज जीबी पंत, एक्चुअली डायरेक्टली मेंशन, आई नो दिस स्लाइटली डिफिकल्ट बट यू शुड नो। आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट विल बी सुसाइडल टू माइनॉरिटीज, जीबी पंत सेज दिस, ठीक है। Now, एक चीज और बताए थे, since you are talking about Bhimrao Ambedkar, yes, initially before the independence, Bhimrao Ambedkar was supportive of the idea of separate electorate to be given to Dalits or depressed classes, but when the Constituent Assembly debates was happening, he was opposed to that. Up to now, we are getting independence, so now there should not be any concept of separate electorate. ठीक है, ठीक है वीर शर्मा, since you are writing it, that is why I have explained. Okay, हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो स्पीच है ये जीबी पंत का है, हालांकि चारों इसी ओपिनियन में थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑल फोर, इवन सरदार पटेल आल्सो रोट सेड अबाउट अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट। तो टेक्निकली जो ये आइडिया है, ये चारों के आइडिया थे, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, दिस वर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट विल बी सुसाइडल टू माइनॉरिटीज, ये एग्जैक्ट वर्ड जो है जीबी पंत ने कहा था, एंड दिस वाज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, बट अदरवाइज यू शुड नो दीस थिंग्स, है ना। खैर, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया था, लाइक हियर दिस पर्सन इज मेंशन्ड, बी पोकर बहादुर, ही ओपनली एक्चुअली सपोर्टेड द आइडिया ऑफ सपोर्टिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। दैट्स मेंशन्ड इन एनसीईआरटी बुक। हाँ, देयर शुड बी रिजर्वेशन बट नो सेपरेट इलेक्टोरेट, यस, नॉट, यू आर राइट। हाँ, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट हैपेंड इन द ईयर 1942, 46, 32, 39. व्हाट इज द राइट आंसर? कब हुआ था रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट? यस, वीर शर्मा, प्रीतम, अद्रिजा, श्रेयास रेड्डी, हरिराम, यू आर राइट। 1946 में, फरवरी 1946 काफी फेमस है रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट। इट हैपेंड इन बॉम्बे 1946। देखो, रॉयल इंडियन नेवी मतलब रॉयल मतलब ब्रिटिश, तो जब इंडियन नेवी बिफोर इंडिपेंडेंस वाज कॉल्ड एज रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है, सो ब्रिटिश आर्म फोर्सेस का पार्ट थी। सो उसमें जो जूनियर ऑफिसर्स होते थे वो सब इंडियंस होते थे, है ना। सो द सीनियर वंस वर व्हाइट पीपल, द ब्रिटिश पीपल, बट द जूनियर्स वर इंडियंस, and they were not happy because actually they were treated not properly by the senior officers. तो जो जूनियर मैन होते थे वो अच्छे से ट्रीट नहीं, उनको इंडियंस जो थे उनको सीनियर व्हाइट ऑफिसर्स प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते थे। they were not given actually good quality food and all, तो इसलिए उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा है,
or even actually क्या कहते हैं, they were actually not paid properly, not treated properly by the senior officers. So that is what is called as Royal Indian Navy revolt, or strike कह सकते हो, not exactly revolt but a sort of a strike. Now the next question is, the Great Calcutta Killings happen in the year what? This is also directly mentioned in the NCERT book. August 1946, August 1947, July 48, October 48. What is the right answer? It is linked with Direct Action Day. People are saying B, but actually 16th August 1946 में Direct Action Day है उसी time पर. Actually, I hope you are aware that just before the partition, many actually riots happened. People killed each other in the name of religion and all. So that Great Calcutta Killings of August 1946 is quite infamous in this and all. So that is what you should be knowing it. So A is the right answer. Okay. Now the next is question number 14. Please read it and then answer me. Which of the following is true? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? पहले ये बताओ, देन आई विल हेल्प यू कि कैसे एग्जाम में अगर आपको नहीं आता तो कैसे तोड़ के पहुंचना है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ऑल अबव 18 हैव अ राइट टू वोट, है ना? उस टाइम पे जैसे आजादी पर 21 था, बट ओके, फॉर टुडेज पर्सपेक्टिव, इफ यू आर 18 प्लस यू कैन वोट irrespective of religion, race, caste, gender. So in case of C, because yes, Veer Sharma, very good, fantastic. Actually, universal adult franchise का मतलब ये होता है कि in India, like currently the situation is, if you are 18 plus, you can vote irrespective of your religion, race, caste, gender, tribe, etc. तो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसी वोटिंग हुई थी? अब आप सोचो, वी आर टॉकिंग अबाउट दिसंबर नवंबर 1946. क्या आपको लगता है पूरे ऑल इंडिया इलेक्शन किया जा सकता था ऐसा कुछ? Is it possible that in entire India the election was conducted and every people voted to come up in Constituent Assembly? So the reality was that no, Constituent Assembly was not the result of universal adult franchise. ठीक है, सी तो होगा ही नहीं. मुस्लिम लीग ऑफ कोर्स दे वर आस्किंग फॉर पाकिस्तान, दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस कि हमको सेपरेट कंट्री चाहिए. Constituent Assembly was dominated by one party, yes, that is called as Congress, 82% of them. So B is the right answer. Yes, Veer Sharma, you're right, very good. ठीक है, तो ये साफ लिखा हुआ, it's written in the NCERT book. It was dominated by one party, Congress, है ना? 82% of the members of Constituent Assembly were members of the Congress. ठीक है, तो ज्यादातर कांग्रेस पार्टी ही के लोग थे. That's true. Got it, है ना? किसी ने बी आंसर किया था शुरू में, वीर शर्मा ने शुरू में भी आंसर किया था, आई थिंक बी. नॉट हु स्टडीज ने भी किया था. खैर, ठीक है, तो मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज कई बार जो एग्जाम में अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे, इसको तोड़ के निकालोगे, सोचोगे, तो यू विल रीच टू द आंसर कि 1946 इलेक्शन, आजादी से जस्ट पहले पूरे इंडिया में इलेक्शन हुआ था. नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था, है ना? यू अप्लाई दिस लॉजिक एंड रीच टू द आंसर. ठीक है, सो यार बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. So here is actually the B is the right answer. Okay, now I am thinking okay, we should continue from the next class from here onwards. ठीक है, so let's हाँ, मैंने किया था जल्दबाजी में. यस, हाँ, दैट इज व्हाई आई गिव यू. मैं एक चीज बताता हूँ हमेशा बच्चों को कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है ना, कि कई बार जल्दी में आंसर गलत कर रहे था, बट बी केयरफुल. क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए बताता हूँ, कभी कभी मैं ट्रिकी क्वेश्चन डेलिबरेटली देता हूँ. वो ऐसा क्वेश्चन होता है जो जल्दबाजी में गलत हो जाए, है ना? ठीक है,
So why? Because this is a practice field. This is a practice. What you are doing, that you have to be very careful and in the exam hall, है ना? So this type of class, ये class Sunday को 8 PM पे होती है, ये static GK की, ठीक है? Otherwise from Monday onwards we'll be having revision series from tomorrow 6 PM. We'll be having starting a revision series. Please do join it live. That would be very, very beneficial. So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.